गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स। तो आपके ये सोशल इश्यूज और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक डिबेट हुई है, यूनियन होम मिनिस्टर ने लोकसभा में बताया है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो ज़ीरो पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स ड्रग्स। और गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है कि वो इस नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग को वाइप आउट कर देगी। तो अब आपको पता है कि इंडिया में क्यों ड्रग्स फैल रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारा ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। फिर हमारी मॉरल वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही हैं। कई लोग पेयर प्रेशर में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। कई इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स में जो है ऐसा जो है ड्रग्स का जो है वो काम करते हैं। ठीक है। इंडिया जो है इजी अवेलेबिलिटी भी है ड्रग्स की इंडिया में, क्योंकि इंडिया गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के जो है बीच में पड़ता है। ठीक है। तो गोल्डन क्रिसेंट आपका ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाला राउट है। आपका गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, लाओस और म्यांमार वाला राउट है। तो इसीलिए जो है पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर ये जो है यूसेज ऑफ ड्रग्स बढ़ रही है। फिर आपके जो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का जो रीजन है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आने की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गई है। तो उनको जो है जब ईज़ी अवेलेबिलिटी ड्रग्स होती है, उनके पास पैसा भी होता है, तो ऑफ कोर्स उसका यूज़ भी हो जाता है फिर, है ना? सो इसलिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, आपको हमारा आर्टिकल 47 कहता है कि आपको कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को जो है वो रोकना है और उसको रादर बैन करना है, प्रोहिबिट करना है। तो इसलिए इंडिया जो है, और हम कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के भी जो है वो हम सिग्नेटरी हैं। कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के भी हम जो है सिग्नेटरी हैं। ऐसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस भी हमने साइन किया हुआ है। और बहुत से एक्ट्स भी इंडिया ने जो है वो इनैक्ट किए हैं, लाइक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनडीपीएस। और फिर इंडिया की जो है एनसीबी काम करती है इस फील्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस मिलकर जो है वो अल्कोहल और ड्रग डिमांड को रिड्यूस करने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। डुअल यूज ड्रग्स का मिस यूज़ रोकने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स द्वारा। टेक्नोलॉजिकली भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। और एनसीबी भी एक हेल्पलाइन बना रही है, ताकि जो है लोगों को इससे जो है हेल्प मिल सके। अब अमित शाह जी की स्पीच का इसमें क्या, हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम जितने भी पॉसिबल राउट्स हैं ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के, हमने मैप कर लिए हैं। लगभग 6 लाख किलो ड्रग्स हमने पिछले जो है 8 साल में पकड़े हैं। और जो है हमने लगभग 97,000 करोड़ रुपीज़ के जो है ड्रग्स पकड़े हैं। इतने ज़्यादा ड्रग्स पकड़ने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले से ज़्यादा ड्रग्स जो हैं वो अब मिलने लग गए हैं। ड्रग्स का ना पकड़े जाना, ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है। थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है होम मिनिस्ट्री ने बनाई है, कि एक तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, लाइक एनसीबी। फिर आपकी एजेंसीज़ में आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, जैसे आपकी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हों, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, इनको भी जो है वो एम्पावर कर दिया गया एनडीपीएस एक्ट के अंदर एक्शन लेने के लिए। ठीक है। अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, वो तो अलग ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स की। लगभग 84,000 करोड़ के आसपास की जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है वो होने वाली है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है आपके डिफेंस मिनिस्टर के अंडर जो है वो काम करती है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट का पूरा प्लानिंग प्रोसेस देखती है। जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो आपके कारगिल वॉर के बाद जो बनाया गया, उस उनकी रिकमेंडेशंस थी कि ये एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोक्योरमेंट जो है आपके आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो हो सके। अब इसमें 15 साल का लॉन्ग टर्म विजन रखती है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। उसके हिसाब से जो भी आपके प्रोक्योरमेंट करनी होती है वो करती है। बाय इन इंडिया, बाय एंड मेक इन इंडिया, या मेक इन इंडिया के जो आपकी कैटेगरी हैं वो भी डिफाइन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करती है। ऑफसेट प्रोविजंस, कितने हमसे जो है हम जितना प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें से कितना परसेंटेज जो है फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, उसको भी यही देखती है। फिर ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, या फिर फील्ड ट्रायल वैल्यूएशन, ये सारे काम भी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेबलाइजेशन फंड फॉर कार्बन मार्केट्स। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी रादर इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है एक स्टेबलाइजेशन फंड लेकर आना चाह रहा है, जिसमें कि कार्बन मार्केट में जो है आपको जो है इंटरवेंशन करें, अगर कार्बन मार्केट जो है वो
नीचे जाने लगे तो, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव रहे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि 2008 में जब कार्बन क्रेडिट्स जो है लाए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, तो उस टाइम जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ तो ऑफ कोर्स ये बहुत नीचे गिर गए कार्बन क्रेडिट्स। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, एक स्टेबलाइजेशन फंड लेके आते हैं। इन केस अगर प्राइसेस बहुत नीचे गिरने लगेंगे तो ये मार्केट रेगुलेटर जो होगा वो कार्बन क्रेडिट्स मार्केट से खरीदना शुरू करेगा, ताकि प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएं। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि वो 8 मिलियन डॉलर जो है वो इंडिया को देगा, हेल्प करेगा, ताकि कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इंडिया में चल सकें। अब 2023 और 2025 के बीच में जो है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करने का प्लान है कार्बन क्रेडिट्स में। अब जो है हमने अब नेट ज़ीरो का टारगेट रखा है 2070 तक। हमने एक स्ट्रेटजी रखी है कि कार्बन मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे कि पैसा आएगा, उस पैसे को हम रिन्यूएबल्स में लगाएंगे। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट भी कहता है कि आप कार्बन मार्केट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स का भी, ताकि आप अपनी एनडीसीज को फुलफिल कर सको। कार्बन मार्केट्स क्या होती हैं? बेसिकली अगर आपने 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया है, रिड्यूस किया या सिक्वेस्टर किया है एटमॉस्फेयर से, तो आप बेसिकली आपके पास 1 कार्बन क्रेडिट आ जाता है। उसको आप या तो खुद अपनी जो है कंपनी जो है, समझ लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एबीसी कंपनी को कहा गया है, गवर्नमेंट द्वारा मैंडेट किया है कि आपने 100 कार्बन क्रेडिट्स जो है वो आई एम सॉरी जो 100 टन आपको इससे ज़्यादा आपको जो है एमिट नहीं करना है। अगर उन्होंने समझ लो 120 टन जो है वो एमिट कर दिया है, तो वो क्या करेंगे, 20 टन को या तो वो सिक्वेस्टर करें, रिमूव करें या रिड्यूस करें एटमॉस्फेयर में से, या फिर वो क्या करें, 20 टन का जो है कार्बन क्रेडिट मार्केट से खरीदें। तो एक ही बात है, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो ए कंपनी करे, चाहे वो कोई सी कंपनी या कहीं से भी और, जो है जब तक वो 1 टन को रिमूव नहीं करेगी तब तक वो कार्बन क्रेडिट नहीं बनेगा। तो इससे बेटर क्या है, क्योंकि ए कंपनी जो है अगर वो नहीं कर सकती जो है कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव, तो वो क्या करती है कि वो जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स जो उसने जो है लगा दिए हैं, उसके लिए वो किसी कंपनी से या मार्केट में से 20 कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेती है, ठीक है। जो उसका पैसा होगा वो मार्केट में आएगा, जब वो पैसा मार्केट में आएगा उसको रिन्यूएबल्स इंडस्ट्री में लगाया जाएगा और कार्बन कहीं ना कहीं से जो है ऑफ कोर्स रिड्यूस कर लिया जाएगा, ठीक है। यही होता है आपका कार्बन मार्केट का कंसेप्ट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कह रहा है कि जितनी भी कंट्रीज़ ने जो एनडीसी सबमिट किए हैं उसमें से 83% जो है सब ने कहा है कि हम इंटरनेशनल मार्केट मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे कार्बन मार्केट्स का, ताकि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के टारगेट को पूरा कर सकें। अब इंडिया में अगर हम कार्बन मार्केट देखें तो 2010 और 2022 के बीच में 5.94 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स जो है, लगभग 17% ऑफ ऑल वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट्स जो ग्लोबली इशू किए जाते हैं, वो यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, इशू किए गए हैं रादर। और उस इंडिया ने अभी तक जो है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की कंपनी बाहर की कंपनी के साथ जो है वो कार्बन क्रेडिट्स एक्सचेंज करे, ठीक है। तो लोकल डोमेस्टिक मार्केट को हम जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। ये एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट है। वॉलंटरी कार्बन मार्केट में क्या होता है कि आपकी प्राइवेट कंपनीज वॉलंटरी जो है एक्सचेंज करती हैं डॉक्यूमेंट्स या फिर रिडक्शंस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली को कहा है कि 2016 का जो है CCRGA का जो ऑर्डर है दिल्ली गवर्नमेंट से के जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है दिल्ली रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी, उनसे 97 करोड़ रुपीस जो वसूल करने थे, क्योंकि उन्होंने जो है गवर्नमेंट जो है एडवर्टीजमेंट का दुरुपयोग करते हुए अपनी पार्टी का रादर जो है वो प्रमोशन किया था, गवर्नमेंट जो है पैसे का इस्तेमाल करते हुए। तो अब हम पहले तो देखते हैं CCRGA क्या है। तो CCRGA जो है सुप्रीम कोर्ट का ने 2015 में फॉर्म किया था, और उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी। देखा था कि गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट देती है जो भी सरकारी पैसे से ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्या उसका जो कंटेंट दिया जाता है वो वैलिड होता है, कि क्या वो सिर्फ प्रमोशन के लिए होता है। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मैंडेट किया था कि वो अपनी अपनी जो है अपनी अपनी जो स्टेट्स में ये 3 मेंबर कमेटीज़ बनाएं CCRGA के कंटेंट रेगुलेशन ऑन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के अंदर, और जो है बहुत सारी स्टेट्स ने बनाई भी। और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि आप एडवर्टीजमेंट कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऑब्जेक्टिव, फेयर और एक्सेसिबल मैनर में जो है एडवर्टीजमेंट मटेरियल दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी की प्रमोशन कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है। CM की प्रमोशन में ही आपने जो है वो पैसा लगा रखा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं,
अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट दे रही है, बहुत ही ट्रिवियल मैटर्स पर, रादर बहुत ही अभी रिसेंटली देखा गया एक एडवर्टीज़मेंट, फुल पेज एडवर्टीज़मेंट जो है न्यूज़पेपर्स में दी गई थी, जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल होल्ड कर रहे हैं, और उसमें बड़े बड़े बैनर्स पर जो आपके सीएम की फ़ोटो लगाकर फुल पेज में ऐड दी गई हैं कि जो है 26 दिसंबर को जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग होगा गवर्नमेंट स्कूल में। सो दिस इज़ अ स्पूरियस ऑब्जेक्टिव। जो ये ऑब्जेक्टिव है इसका, इस एडवर्टीज़मेंट का, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एक डाउट पैदा करता है कि क्या एक्चुअल ऑब्जेक्टिव, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, उसके लिए फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स दी जा रही हैं सरकारी खर्चे पर न्यूज़पेपर्स में फुल पेज की, ठीक है। सो ऐसे ही चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव फेयर मैनर में जो है एडवर्टीजमेंट्स देनी है, सिर्फ जो है आपको जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आपकी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग पार्टी को प्रमोट नहीं करते होने चाहिए, और क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास है। एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है ये जस्टिफाइड होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स। सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स को जो है वो कंप्लाई करते होने चाहिए। अब ये प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्या है? 2016 में सीसीआरजीए जो है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस दिए कि आपने जो है एससी मैंडेटेड जो गाइडलाइंस है उसको वायलेट किया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि सीसीआरजीए की बजाय हम भी ऐसा करेंगे कि हम अपनी 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे और टू कंप्लाई विद 2015 ऑर्डर। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग दी 2016 में कि यूनियन टेरिटरीज जो है उनको सीसीआरजीए के अंडर ही जो है वो काम करना पड़ेगा, वो अपनी जो है कमेटीज़ नहीं बना सकती। तो क्योंकि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो ऑफ कोर्स सीसीआरजीए ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद देखा कि जो गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट जो सीसीआरजी है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी को बोला कि आप आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपीस जो पब्लिक का पैसा है वो रिकवर करो। और आम आदमी पार्टी के जो कन्वेनर हैं उनको कहा गया अरविंद केजरीवाल जी को कि 42 करोड़ आप पे करो 2017 में, और बाकी जो है पैसा वो आप 30 दिन के अंदर पे करो। लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक जो है आम आदमी पार्टी ने एक भी पैसा जो है वो पे नहीं किया है। इसी को ही लेकर जो है वो ऑर्डर अब इशू किया गया कि आप जो पिछले 5 साल से पे नहीं किया गया उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, समुद्रयान मिशन। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो उन्होंने बोला है कि ऑफ अर्थ साइंसेज, उन्होंने बोला है कि समुद्रयान मिशन जो है वो 3 लोगों को जो है वो 6000 मीटर की डेप्थ में भेजेगा, मत्स्य 6000 व्हीकल में, ठीक है। समुद्रयान मिशन क्या है? एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल व्हीकल बनाया गया है जिसमें 3 ह्यूमन बींग्स जाएंगे 6000 मीटर की जो है वो गहराई में, ओशन में, ताकि वो डीप ओशन को एक्सप्लोर कर सके। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में बेस्ड है, उन्होंने इस व्हीकल को डिज़ाइन भी किया, डेवलप भी किया। इसकी लगभग 12 घंटे तक जो है वो अंदर रहने की जो है नॉर्मल ऑपरेशन में जो है रहने की जो है कैपेसिटी है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी ह्यूमन सेफ्टी इंश्योर कर सकता है ये 96 आवर्स तक। अब ये मैन्ड सबमर्सिबल जो ये व्हीकल है ये डायरेक्ट फिजिकल प्रेजेंस लेकर जाएगा 6000 मीटर, ठीक है। आप इमेजिन करो रिसर्चर्स को ओशन के डीप में लेके जाया जाएगा। और अक्टूबर 2021 में जो है ये मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इंडिया ने इस मिशन के साथ ही जो है एलीट क्लब ज्वाइन कर लिया, जिसमें यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना, सिर्फ इन्हीं के पास ये कैपेसिटी है जिसमें ये ऐसे व्हीकल्स को लेके जा सकते हैं सब सी लेवल पर। इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारी। हम ब्लू इकोनॉमी को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, हमारी वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाइनू बापू ऑब्जर्वेटरी। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डिस्कवरीज जो है वो 40 इंच टेलीस्कोप जो आपका वाइनू बापू ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया है वो हाईलाइट की गई हैं, क्योंकि 50 ईयर सेलिब्रेशंस मना रहे हैं हम वाइनू बापू ऑब्जर्वेटरी की। अब ये ऑब्जर्वेटरी जो है जावादी हिल्स जो है आपके तमिलनाडु में, वहाँ पर लोकेटेड है। 1972 में इसको इंस्टॉल किया गया था इस टेलीस्कोप को, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर जो है वो काम करते हैं। अब जो वेणु बापू जी हैं वो आपके इंडियन एस्ट्रोनॉमर जी थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, और इन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में लगाए इंक्लूडिंग दिस ऑब्जर्वेटरी। और इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया बहुत सारी मेजर डिस्कवरीज में, लाइक प्रेजेंस ऑफ रिंग्स अराउंड यूरेनस प्लैनेट, न्यू सैटेलाइट ऑफ यूरेनस, एटमॉस्फेयर उन्होंने देखा, आपके गैनीमीड एक सैटेलाइट है जुपिटर की, उसका भी एटमॉस्फेयर देखने में इनका बहुत बड़ा रोल था। बाकी भी यहाँ पर ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो इंडिया में है इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डोकरा मेटल क्राफ्ट्स। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाल बाजार जो है आपका, जो झारखंड की बाउंड्री पर पड़ता है, वो एक हब बनता जा रहा है डोकरा मेटल क्राफ्ट का। डोकरा मेटल क्राफ्ट जो है वो एक एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट है, जो ओझा मेटल स्मिथ्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना में। ये एक तरह से बेल मेटल क्राफ्ट है जो कि 5,000 साल पुराना है। इसमें ब्रास का यूज़ करते हुए जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को फुली हैंडक्राफ्ट किया जाता है। लगभग महीना लग जाता है इस बेल को बनाने में। ठीक है। अब ये जो है इस बेल हैंडक्राफ्ट को बनाने में, तो अब ये प्रोसेस जो है, ये 7 टू 8 वैराइटीज़ ऑफ क्ले इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, और ये मेटलर्जिकल स्किल्स को कंबाइन करता है। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपने पढ़ा होगा ना, हड़प्पा के टाइम पे शुरू हुई थी ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसमें कि समझ लो एक आपने एक बाउल बनाना है, ठीक है, ब्रास का। तो आप क्या करोगे कि पहले आप उसका क्ले का उसको बाउल बनाओगे, उसके अंदर लिक्विड को पोर करोगे आप ब्रास का, और फिर जब वो है आपके जो क्ले का बाउल है उसको आप हटा दोगे, बाद में जो लिक्विड जब वो जम जाएगा तो वो एक तरह से वो बाउल बन जाएगा। ठीक है। तो सॉलिड कास्टिंग, हॉलो कास्टिंग, दोनों की तरह की जो है प्रोसेस को फॉलो किया जाता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग में, लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है वो विद मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी जो है उसको इनाग्रेट किया है सेंट्रल आर्काइव्स में, फोर्ट इन थिरुवनंतपुरम में। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स केरला गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। 3 करोड़ का म्यूजियम है। 8 थीम बेस्ड गैलरीज बनाई गई हैं। 187 ओल्ड एंड रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। कुछ एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स जैसे कि वटेजुथु, कोलेजुथु, मलयानमा और तमिल और मलयालम में बहुत सारी और एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे यहाँ पर रखा गया है। अ, बहुत सी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो आपके टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, एजुकेशन, प्रेजेंस, फेस्टिवल्स, ये सब जो है आपके त्रावणकोर, कोची और मालाबार में जो होते थे उनको जो है वो कवर कर रही है। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अलावा स्क्रोल्स, बैम्बू स्प्लिंट्स, कॉपर प्लेट्स, इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसी लगभग 180 8 थीम बेस्ड गैलरीज हैं। जैसे फर्स्ट गैलरी आपकी हिस्ट्री ऑफ राइटिंग की है, ठीक है, जिसके अंदर जो है मरायूर केव पेंटिंग्स और एंग्रेविंग्स और स्टैम्प्स और जो सील्स यूज़ की जाती थी हड़प्पा के टाइम पर, उनके रेप्लिका भी जो है वो कवर किए गए हैं। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is zero tolerance towards drugs. So this topic is important for both your social issues and your security section. Okay, so recently during a debate in Lok Sabha, Union Home Minister has said that government has zero tolerance policy towards drugs, and the government is committed to wipe out narcotics trafficking from India. So why this menace of drugs is expanding in India? Because there is disintegration of old joint family system. There is decline of religious and moral values. People get indulged into drugs due to the peer pressure from friends, of course, and because of easy availability, this is also being used at informal groupings, and even seniors at educational institutions are using it. So why there is easy availability of drugs in India? Because India is at the crossroad of golden crescent and golden triangle, which are the two routes of drugs in the world, and particularly in the border areas, the usage of these drugs are increasing. Agricultural reforms and other industrial activity in certain states have like Punjab, Haryana, Maharashtra, has led to increase in income, disposable income, and people, when it combines with easy availability, people start using drugs increasingly. So what are the steps that have been taken by the government? Of course, article 47 of our constitution prohibits consumption of intoxicating drugs injurious to health, and because it is a DPSP, the state has to endeavor towards it. India is also signatory to certain conventions, international conventions, in which we have to wipe out narcotics trafficking from India. So for that, India has enacted certain legislations like Drugs and Cosmetic Act, NDPS Act, which is very famous. Under that, Narcotics Control Bureau has been formed in 1986. Ministry of Health and Ministry of Social Justice is together involved in alcohol and drug demand reduction policies and drug de-addiction programs to prevent misuse of dual use drugs. And an ministerial committee also exists under Ministry of Health and Ministry of Chemicals. We have also made technological interventions like narco coordination center mechanism has been set up by the Ministry of Home Affairs. NCB is also working towards launching a helpline.
So, what are the highlights of the speech that Union Home Minister has given? So, he has said that government has mapped out possible routes and drug trafficking networks in 472 districts across the country. So, no matter how big the culprit is, in the next 2 years, they will be behind bars. 6 lakh kilo of drugs were seized between 2014 and 2022, worth about 97,000 crore rupees. So, Home Ministry has adopted a three-pronged strategy in which they will be strengthening institutions, empowering and coordination among central agencies and even state agencies. There will also be extensive awareness and rehabilitation campaigns, and even the Home Ministry has empowered, rather the central government has empowered central armed police forces like BSF, Seema Suraksha Bal and Assam Rifles to register cases under NDPS Act. So the next topic is Defense Acquisition Council. This topic is important for your security section. So Defense Acquisition Council has accorded approval for approval of necessity for 24 capital acquisition proposals, which are having a total value of about 84,000 crore rupees. So this Defense Acquisition Council is headed by the Defense Minister, of course, and it uh, takes care of the overall defense procurement planning process. So it was formed after the group of ministers' recommendation on reforming the national security system in 2001 after the Kargil war, and to ensure expeditious procurement of approved requirements of the armed forces. This Defense Acquisition Council was formed. So this council gives in principle approval of 15-year long-term procurement process for the defense forces. It also categorizes the proposals under Buy in India, Make in India, Buy in India, and Make in India categories. It also makes decisions regarding the offset provisions whenever there is acquisition proposals above 300 crore rupees. It also decides upon the transfer of technology agreements and also undertakes field trial evaluation. So the next topic is stabilization fund for carbon markets. This topic is important for our environment section. So India is also planning to have a stabilization fund so that in case of the prices of carbon credits fluctuate in the carbon market, then of course they can make an intervention to make the prices stable, and so that these carbon credits remain attractive for investors. So you know why it is being done, because when in 2008 this mechanism of carbon credits was introduced, the in other countries the prices slumped heavily because the economic crisis at that time happened, and that's why the government has learned from it, and it is planning to bring this stabilization fund so that in case the same happens now, then this market regulator would intervene and buy carbon credits from the market in case prices fall too low. So World Bank has also said that it will provide $80 million to help India prepare carbon pricing instruments between 2023 and 2025. Energy saving certificates will also be converted into carbon credits. So India has made commitments or NDCs under Paris Climate Agreement. We have also committed to net zero emissions by 2070. To meet its NDCs, this is a mitigation strategy, carbon to explore the to explore the instruments of carbon markets. Article 6 of Paris Agreement also provides for the use of such international carbon markets by countries so that they can fulfill their NDCs. So, what are carbon markets? For that, you have to understand what is a carbon credit. So let's take an example. There is a company called ABC Limited. It has been mandated by the government that it cannot emit more than 100 uh, tons of carbon. Okay, just we are taking any random example. So let's suppose that it has been mandated that this company cannot emit more than 100 tons of carbon. But what if it has emitted about 120 tons of carbon into the atmosphere in and what it has done, it has crossed the threshold by 20 tons of carbon. So what it will do, it will have option either to reduce that 20 tons using sequestering techniques, carbon dioxide removal from atmosphere or other reduction techniques, or purchase 20 carbon credits, so that the money that will flow, so what will it will do, it will go to the carbon market and it will purchase 20 carbon credits as a form of penalty towards crossing that threshold, and the money that has been brought into the system using this technique will be utilized to sequester carbon or reduce carbon. Or for example, there is also another case. Let's suppose I am
XYZ Limited. I was permitted to emit about 100 tons of carbon, but I emitted only 80. Okay, so then I will have the right to emit 20 more. Instead of emitting 20 more, I would issue 20 carbon credits that yes, I have not done it. So kind of, which was which the kind of it is kind of that if I were would have emitted 100 tons of carbon, then also I was permitted to emit 100 tons of carbon, but I have emitted only 80. So I have basically reduced 20 tons of carbon from atmosphere. So I would issue 20 carbon credits, and this ABC Limited would purchase them because it has crossed its threshold. We have to basically maintain 200 tons of carbon from both companies. So if one has exceeded the limit and one has under used its permitted carbon emissions, then of course we have this 200 tons net in the market. This is the basis on which these carbon markets operate. If one has crossed the limit, then they will have to pay penalty to the one that has not utilized its full potential. So look at it at the global level, or at least at the national level. This is how carbon markets operate. The United Nations Development Program also says that 83% of NDCs submitted by the countries have also shown intent towards exploring international market mechanisms, carbon market mechanisms, to reduce their greenhouse gas emissions. In between India, between 2010 and June 2022, India has issued about 35.94 million carbon credits, which is about 17% of all voluntary carbon credits, market credits issued at the global level. And India is currently forbidding its exports, or guarantee and it is also guaranteeing the expansion of a local domestic market where you cannot currently export these carbon credits at the global level. And we are going to explore the carbon market at the at the voluntary level. Okay, which means private parties will voluntarily exchange certified reductions of greenhouse gas emissions in lieu of carbon credits. So the next topic is Committee on Content Regulation in Government Advertising. This topic is important for your governance section. So Delhi Lieutenant Governor has directed the Chief Secretary of Delhi Government to implement a 2016 order of Committee on Content Regulation in Government Advertising. So for that, we have to understand what is the CCRGA. So in 2015, the Supreme Court realized that the government advertisements have become so spurious that political leaders are using their images, and they are just making advertisements using the government funds and to promote themselves or the ruling political party. So for that, a three-member body was to be constituted by these states governments, and which would of course consist of persons with unimpeachable neutrality and impartiality, and they would look into the content which has been used by the governments to fund their advertisements on all media platforms. So basically, states were mandated to set up these committees to look into the government advertisements. So under the Supreme Court's guidelines, the government advertisements should be relevant to government's constitutional and legal obligations. It should not be promoting any political party or interests of the political party. These advertisements must be very objective, fair, and accessible for all. It should be justified and undertaken in an efficient and cost-effective manner. You just cannot promote the face of the leader or the political parties using the government funds. So, what is this controversy? In 2016, the CCRGA issued notices to Delhi government because it found that there were violations of Supreme Court mandated guidelines in the advertisements which were published by Delhi government. And in response, the Delhi government said that we will not abide by CCRGA because we will form our own committee. But in 2016, Delhi High Court ruled that union territories cannot form their own committees. They have to abide by the orders of CCRGA. And CCRGA investigation found that a number of Delhi government advertisements violated the guidelines on various fronts. So it directed the Delhi government Directorate of Information and Publicity to recover 97 crore rupees from Aam Aadmi Party and its convener, who is also the Delhi CM Arvind Kejriwal. So in 2017, DIP directed the Aam Aadmi Party to pay 42 crore rupees to the state exchequer immediately, and the rest of the amount
has to be paid within the next 30 days. But even after 5 years, the amount has not yet been paid. That's why the Delhi Lieutenant Governor has directed the state government through DIP that this amount should be recovered. So the next topic is Samudrayan mission. So this topic is important for your environment section. So Union Minister of State for Earth Sciences has said that Samudrayan mission will be sending 3 personnel to 6,000 meters depth in a vehicle called Matsya 6000. So this is a self-propelled manned submersible vehicle which will take 3 human beings for deep ocean exploration. This vehicle has been designed and developed by National Institute of Ocean Technology, Chennai. It has an endurance of 12 hours, and it can also operate in emergency situations for 96 hours for the human safety. India has joined the elite club with this Samudrayan mission. India has joined the elite club of having the capability to armed vehicles to carry out such subsea activities. So why it is relevant for India? Because it has a very long coastline, so it is important because we are also highlighting that blue economy is part of the 10 core dimensions of India's growth. So the next topic is Vainu Bappu Observatory. This topic is important for your science and tech section. So recently, discoveries of 40-inch telescope at the Vainu Bappu Observatory were highlighted at its 50-year celebration. It is located on Javadi Hills, that is in Tamil Nadu. It was installed in 1972, and it functions under the Indian Institute of Astrophysics. So who was Vainu Bappuji? So he was an Indian astronomer, and he helped in establishing several such astronomical institutions, and he had a big role in major discoveries like the presence of rings around Uranus planet, a new satellite of Uranus, and the presence of atmosphere around Ganymede, which is a satellite of Jupiter. So the next topic is Dokra metal crafts. This topic is important for your art and culture section. So Lal Bazar, which is on the boundary of Jharkhand, is becoming a hub for Dokra metal craft. It is kind of an ancient bell metal craft which is practiced by Ojha metalsmiths living in Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, and Telangana. It is a bell metal craft which is about 5,000 year old, and in which the artifacts are made by brass, made of brass, and the whole object is fully handcrafted. So this process, which uses about 7 to 8 varieties of clay, and it is using lost wax technique, which you may have read about in Harappa also, in which the brass or the metal is boiled it into a liquid, and after making a clay structure, then it is poured into that clay, and after that clay is removed, and the particular handcraft is made. Okay, so the next topic is Palm Leaf Manuscript Museum. This topic is also important for your art and culture section. So Kerala CM has recently inaugurated a palm leaf manuscript museum with modern audio visual technology at the renovated Central Archives located at Fort in Thiruvananthapuram. Okay, so this is a very famous place, fort in Thiruvananthapuram. So, Palm Leaf Manuscript Museum is set up by Department of Archives, Kerala government. It's a 3 crore museum which has about 8 theme-based galleries. It consists of about 187 old and rare manuscripts, including the ones like Vatezuthu, Kolezuthu, Malayanama, and other ancient Tamil and Malayalam scripts. So these manuscripts delve deeper into aspects like tax administration, trade, education, prisons, and festivals in erstwhile states of Travancore, Kochi, and Malabar. Besides palm leaf manuscripts, there are scrolls, bamboo prints, and copper plates which are included in the collection. So, out of the 8 theme-based gallery, the first gallery, History of Writing, is making an introduction of the evolution of writing, particularly in Kerala, and it will also introduce visitors to Marayur cave paintings and engravings, and the stamps and steels which were used by Harappan people. Okay, so these were our topics for today. Please download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.